But now, so had you guys not been there, this call wouldn't have been a possibility. Guys, thank you so much for joining in. Yes, nice to see you guys. And just to kind of introduce myself, I'm Kavita Kapoor Khalsa. I'm a certified facilitator with Access Consciousness and also a 3-day body class facilitator from India. So thank you so much for joining, and thank you, Nishtha, for making this possible. Okay, Nishtha is from Delhi, and she has some amazing ideas. So you'll keep listening from us every now and then. Thank you, Nishtha. And yeah, this call is about ask and you shall receive. What is your ask, Nishtha? And what is it that you're resisting to receive? Okay, so yes, you were just right. You are so magical, maybe because of Access, but maybe Access is so magical because of you. Another thing, based on this topic, ask and you shall receive, is that since I got into Access and since I'm also a vast facilitator, I also keep talking to a lot of people. I think after coming into Access, there are two things that happen with people. One is acceptance and allowance, and one is people start taking too much pressure. They want to do everything too soon, and they want to do too much without applying the tools and without actually integrating Access into their lives. Totally. So I think after Access bars, after becoming a facilitator, when I did a foundation with you, the most magical thing that I got after doing foundation was that I got to be myself, and I got so much ease into my life. You remember the foundation that we did together, that I did from you? All I could do was wear suits. Yeah, I remember. Yeah. Oh my God. I was under so much pressure of image, of personality, of how one should look in a spiritual field and what should somebody do. But you gave me so much ease. And since then, I've, just started listening to what my reality should. So I just want you, maybe just to give this a little direction. How do people stop taking so much pressure when it maybe comes to general life or Access and classes in Access? And okay, thank you so much for asking this question, because I just want to begin with the point that yesterday I had this meeting, there was an intro talk with like a segment of people who were pretty well off. Okay, well off as in at least above 100 CR turnover in a year. So when I was there yesterday, their ask was, okay, they never even asked how to get out of pressure. And we take the pressure. Is it even ours? Whose pressure are we taking on? And Access gives us those tools that can dissipate that pressure. And the best is, when you get your bars run. Now, how many of us, we like, like we've done it, like, once we've done it. And so we don't even bother to ask that body, do you require anything? What can change this if we are working together? So pressure is a very normal thing, okay, in this reality. If there is no stress, no pressure, there's something wrong with you. You have to take pressure. If you're not there, then you're not probably doing it right. And so everywhere you've all made it a way of living, because this was my question when in January, when I was doing business done different with Simon. I just asked this question, that how does one relax? So now the opposite of pressure, taking pressure, is to relax, right? Am I right? Nishta, it's about learning how to relax into possibilities, right? That's what. So if we did not have pressure, we would have relaxation. And we don't know how to relax. And relaxing in this reality is something really bad, which means you're doing nothing. And doing nothing is not acceptable. So you're fighting something which is really not something that you can fight, because you're fighting yourself, your body, your reality. You're just fighting. There is a continuous fight. And if you're not fighting, you're perceiving the fight around you. Are you not? And everything that you're perceiving may not be yours. It's just that you're aware of it. हमें महसूस हो रहा है तो हमें लगता है हमारा ही होगा. What if that's not true? What if you can recognize that there are other ways of being in this reality? So ask and you shall receive is also about what you've decided कि नहीं मांगना है, because मांगेंगे और मिल गया तो नहीं पता है उसको क्या करना है. And that's why a lot of people don't even ask for money. And the way you ask for money is about, I want it, I want it, I want it, which means I lack it, I lack it, I lack it. Can I say something? Yes, please. I think one thing that ask and you shall receive, main mere liye kya hai, what I feel is
मेरी तो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था बिफोर एक्सेस की नजर लग जाती है। हाँ बिल्कुल। रेगुलरली एक हफ्ता जिम चले गए, उसके बाद गए नहीं कि नजर लग जाती है। सज हाँ धज के बिल्कुल। घर से बाहर चले गए, घर आके थक गए तो नजर लग जाती है। पैसे सो ज्यादा राइट। बना लिए एक महीना, दूसरे महीने नहीं बना पाए क्योंकि नजर लग गई। अपने लिए कुछ नहीं खरीदना कि नजर लग जाएगी। सो आई थिंक दैट गिल्ट फैक्टर वाज सो इनसाइड मी। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल गो व्हेन इट विल गो, बिकॉज ये एक दिन की उपज नहीं है, ये कई नहीं, अब तो कई। चला गया। दैट इज व्हाई आई एम सो बट इट टुक with कपल ऑफ मंथ्स, राइट? हम yeah. सोचते हैं कि अभी तो क्लास कर लिया, अभी तो धमाल होना It took चाहिए, और वो हम। foundation and body class with you. That's all it took. या बट द ओनली थिंग इज कि वो हम उस अलाउंस में भी नहीं आ पाते कि अभी तक नहीं गया है, कैन आई बी एन अलाउंस ऑफ माई सेल्फ स्टिल, Yeah. आई नॉट मेक इट सिग्निफिकेंट कि चल नहीं है, जब जाएगा जब जाएगा। आई नीरा, थैंक यू सो मच। Yeah, so that is where we are all stuck. So what have you decided is asking that it isn't, and कहाँ तुमको लगता है कि ask and you shall receive जो है ना, बहुत सारी, क्योंकि हम मेटाफिजिकल रियलिटी से आते हैं, तो हमें लगता है कि ask मतलब मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए। I would like to manifest a lot of money. You can't be, because there is no such thing called manifestation. Manifestation is how things show up, not that they show up. Actualization is what you would like that it shows up, okay, in whatever way it shows up. तो हम वेट कर रहे हैं कि ये किया तो इसका ये होना चाहिए. There is no real cause and effect around it. Yeah. So, एक second. Ritisha has a question. Yes, Ritisha. Ma'am, as I saw your call's name, ask and you shall receive. Yes. The very first question that clicked in my mind, I don't know from where I was perceiving it. What if I ask something negative and I receive that too? And you will. And what, see, my point is, Ritisha, जब अगर हम किसी चीज को भी जज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो वो चीज वैसी सॉलिडिफाई हो जाती है. अगर एक एनर्जी आ रही है और आप उसके लॉजिकल डिडक्शन या कंक्लूजन में नहीं जाते हो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं मुझ जैसा इंसान भी किसी को बहुत नेगेटिव लग सकता है, ओके? मुझ जैसा इंसान किसी को बहुत पॉजिटिव भी लग सकता है. ये पॉजिटिव नेगेटिव जो एक पोलैरिटी में आपको बांध के रख देता है, उसके आगे आप जा ही नहीं पाते हो. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए. व्हेन यू टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड यू, एंड दैट्स नॉट द सेम एज आस्क एंड यू शैल रिसीव. Okay, something that you want to attract in your life, which means you have a specific outcome rather than the contribution that the universe would like to give it to you, okay, of what you could create or what you would like. Okay, receiving is not attracting things into life. अट्रैक्शन इज जो देखा है ना, बस उतना ही. और तुम्हें कैसे पता वो कितना पॉजिटिव है, कौन सा कितना नेगेटिव है? आई वुड लाइक टू हैव अ बिग बंगलो, बिग कार, व्हाटएवर एंड ऑल. वो इंसान ने कैसे पाई होगी अगर तुमने एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक the secret and all, they talk about it, right? That more you think and more you imagine, more it will get created, and a lot of people get frustrated because they can't make it come to fruition. Attraction is Yeah. determining what you would like to have in your life and trying to make it come. Well, while receiving is that receiving it with no point of view. You are trying to judge something into existence with the attraction point. What if it's not had to? It doesn't have to be that. Law of attraction and receiving are two different things. Receiving is completely different. That you're getting the quantum entanglements to start creating for you. What if law of attraction is not the answer? You've been trying to use that to try and explain people कि okay, ऐसे मांगना होता है. मांगने का भी एक तरीका होता है, तुम सही से नहीं मांग रहे हो. Okay, what if that's not true? गलत मांग रहे हो, उसमें भी तुमने जजमेंट डाल दिया कि नहीं, सही से नहीं मांगा तुमने. Okay, so you then have to keep judging yourself that okay, maybe I'm not doing it right. Then then you will have to have a point of view. I'm not grounded enough. That is why things are not showing up. Okay, then ये होना पड़ेगा, उसके लिए शुद्धि होनी पड़ेगी, उसके लिए बुद्धि होनी पड़ेगी. Whatever, I mean, just joking. Okay, yeah. Yes, Ritisha. No, that's it. Thank I you. would think on the same note, law of attraction and manifestation. Can you explain Piku universes a bit? Oh, that is so. Pico universes is basically तुमने already एक एक small little bubble, तुमने ऐसे caricatures देखे हैं वो, जिसमें वो ऐसे bubble में वो सोच रहा है बस, देखे, विजुअलाइज कर रहे हैं वो सारी चीजें वहां पे. तो और वो चीज मेरे पास आ रही है और आप ट्रैक कर रहे हो, तो आपने वो पूरी दुनिया बना ली, उसमें जी भी लिया, और वो एक अलग से आपका यूनिवर्स बन चुका है, पर वो फिजिकल रियलिटी में आपके पास नहीं आया है.
That is a Pico universe. It's a universe in its own. You're putting a lot of energy there. Okay, yay. But it's still in the bubble phase. Okay, it's not in the actual reality. So we create a lot of Pico universes thinking that this will give us what we are asking for, but that doesn't do that. So Pico universes is, so many techniques. हम obviously सीधा तो access में बहुत कम लोग आते हैं, but जो आते हैं वो सोच रहे होते हैं, और वो सोच में ही वो पूरी चीज उनको ह्यूमनॉइड्स कैसे फंक्शन करते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, वो सोच में ही अच्छा लग रहा है, पूरा मिल गया उनको, अब और क्या चाहिए, राइट? और वहां पे वो चीज लिमिट हो जाती है, वो चीज एक्चुअलाइज होने से पहले ही खत्म हो जाती है। वो चीज जो पहले से डर गए वो तुम्हारे पास आएगी कैसे, मुझे बताओ? मांग लिया तो मिल ही जाएगा, फिर हमें समझ नहीं आएगा। और बहुत लोग तो इसलिए नहीं मांगते हैं कि अगर बहुत पैसा आ गया तो तुम्हें पता है कि तुम पूरी तरह से वो लोग जो तू चूतिए बैठे हैं वहां पे उनके जैसे बन जाओगे। assholes to be sophisticated, assholes नहीं बनना है हमको, so we stop asking, we don't want that, but desire है लेकिन मांगना भी नहीं है। Okay, so that is one thing that so you never even consider asking the elementals to contribute to you, because ask and you shall receive. They're out into the universe. There are some molecules, they're called the elementals, which were not there in the periodic table. Okay, but they are part of this consciousness. Okay, so almost as a request of instantaneously, you can engage with those elementals and ask and you shall receive. It can be a reality which you never considered was true and possible. Yeah. So I would like to do a clearing there for you for those elementals, you know, and anything could turn out badly also. So what? Anything that could turn out badly and it doesn't. What about that? And when that happens, when things are really going bad, and then you realize, okay, this didn't go that bad, guess what? The elementals are working, they are in action. So, what energy, space, consciousness, and choice can you and your body be? To embrace and engage all the elementals with totally everything that doesn't allow that, will you destroy and uncreate it now? Right, wrong, good, bad, purple, line, shorts, boys, provides, and beyond. Right? So, also, what if you did not go into any kind of definition or conclusion? Like Ritisha just asked, what if I ask for something, I really get it, and then I don't know how to handle it? Okay, it's, for example, you go in, it's like, this, such a beautiful person, I would like to have sex with them, and then it doesn't turn out the way it should. Then you will have to judge yourself for that. What if you did not have to go to any conclusion, any judgment, any definition? That you're making it wrong, you're making yourself wrong. You're like, okay, I required that experience and I went for it and I got it. Okay, fine, what else can I choose now? So what energy, space, consciousness, and choice can you and your body be to engage with those quantum entanglements of the elementals to create a change with total ease? Whatever change that you're asking for, that you're desiring for. And everything that doesn't allow that, will you destroy and uncreate it times a gazillion? Right, wrong, good, bad, purple, line, short, boys, provides, and peons. So does anybody have a question on ask and you shall receive? Otherwise, I can do a couple of more hearings. And there are people still joining in. Great. Okay, one more question. Yes, please. You don't know what to ask for. What if you so great? Isn't it amazing? What if you know the energy? So you don't have to be specific with your ask. A lot of people know exactly ये हरी गाड़ी चाहिए जो कि BMW है और ये मेरे घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए इस तारीख को, right? They just know it, and then they are, they sometimes face a disappointment, and sometimes they're really creative because they have no doubt about it. But what if you did not have to know कि मुझे क्या चाहिए, but तुम्हें ये पता है कि उसकी एक एनर्जी है, ऐसा कुछ चाहिए. It could be abstract. Are you willing to have that energy in your life? That is what we are saying. Yes, Pallavi. So Mona is asking, just a second, I just read this, difference between entities and elementals. There's a huge difference, sweetheart, because elementals those were the energies or the elements that were missing in the periodic table. And entities they are not entities. Like gratitude is one of the elementals. Joy is one of the elementals. Would you like, so that's an energy which is there trying to contribute to you if you're willing to receive from them. So how to ask? Just ask. How did you ask me? You just asked, right? What have to do with engaging the elementals and making a communion? You can have that communion first with yourself. You can't have communion with something else. That becomes a relationship. Communion is only oneness.
oneness can be only with yourself. Yes, Ritisha, you have a question. And Pallavi too. Yes, Pallavi, first you. So, what it will take for me to be a life coach, giving guidance to the remotely located Indian students, making their careers very nicely. What will it take? Tell me. That's an ask. That's a very clear cut ask. What is it that, how do you want the universe to contribute to you? Is by you choosing, you making a choice. Okay, I would choose to do this, which literally would mean that take up some kind of a modality which you can reach out to them, which will be understandable. अब मैं कल बहुत ज्यादा हाई एंड, वी वर जस्ट टॉकिंग इन द डिवोर्सलेस रिलेशनशिप, राइट अभी, कि बहुत हाई एंड लोगों के पास जाओ तो उनको भी समझ नहीं आती है, बिकॉज एक्सेस की एक अलग भाषा है, पल्ले ही नहीं पड़ता उनको, बोल क्या रहे हो तुम, राइट? और ना वो जानना चाहते, बिकॉज उनको चाहिए क्विक फिक्स, हैक्स चाहिए यहाँ पे सबको, मैंने मांगा तो मिला क्यों नहीं, और नहीं मिला तो बकवास है ये. So everything that is that you straight away jump to a conclusion without even asking another question, or what else is required here, what am I not open to, what am I not willing to receive. Could you, like, just try and uncreate all of that, right? Wrong, good, bad, purple line, short, boys, bad, Indian. So yeah, you can be that. You just asked for it. You put it in a question. What will it take? A lot of people go into a question, why can't I do this? Now that is not a great question to ask. Or how will this happen? हो ही नहीं सकता है. That is not a great question again. Point is, what are the multiple opportunities or possibilities in the universe that I've not yet explored or tapped into, or, those kind of energies that you could, कभी कभी सवाल नहीं बनाना आता, कोई बात नहीं, you just know the energy universe this, that's what I'm asking for. What if you did not have to make it significant? अरे इसको सब मिल जाता है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है. And trust me, वो बोलना बहुत आसान काम है, क्योंकि when I started off with Access journey, I was there too. I am not saying that I have arrived it in a day. पीछे मुड़ के देख रहे हो तो मेरे को पता चल रहा है वो 10वां साल चल रहा है, राइट? पता भी नहीं चला कि इतना चल दिया है. चलना शुरू करो, पीछे क्यों मुड़ के देखना है? कितने लोग गाड़ी पीछे मुड़ के देख रहे हैं अपना, मैं कहाँ थी, व्हाट इफ वहां से तो आप निकल ही नहीं पाओगे ना, बिकॉज वो इतना अट्रैक्टिव है तुम्हारे पास, वो पुल करता है, वो बहुत डेंस है, बहुत ग्रेविटी है उसके अंदर. आ जा मेरे पास, यहीं पे ठीक है. तो पता है कैसा है, खुशी पता नहीं कैसी होगी, हैंडल हुई कि नहीं. बहुत लोगों को खुशी में हार्ट अटैक आ जाते हैं, so हमें वहां जाना ही नहीं है. Everything that brought up for and pop. Yeah, so if you could just simply ask and not have any kind of fear or doubt in that, I think that makes things easier. So do you have a doubt that you cannot be a life coach? I don't have doubt. It is just I am searching for the tools. And don't you have the tools already? Yes, I do have. So what will it take for you to go and run, like gather people who know bars or something, and or probably take your other modalities that you have to that segment of the society that is not even interested. Okay, normally कहते हैं खाली पेट तो भगवान के भजन भी नहीं गाए जाते हैं. So what is it that you can do to kind of provide that environment to them, that they would have, they can sing songs, and then what if भगवान के भजन ही नहीं गाने हो, they can just have so much fun, and that creates the energy of what you're asking for. Wow. And are you not the energy of fun and joy? Look at yourself. Huh? Just taking that. What if you did not require fancy tools? और जितना अभी तक सीखा है, अब्सॉर्ब किया है, किधर से भी सीखा हो, वो वहां तक लेके जाने में कितना ही टाइम लग जाएगा आपको? Yes, thank you. It's just a choice. You just have to go there and start identifying people, gather people कि चलो मेरे साथ वहां पे. Yes. कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग नहीं चलेंगे, and that's okay too. क्योंकि जहाँ एक्सेस आपको लेके जाना चाहते हैं, सारे वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं. Wow. तो इट्स ओके, जो पहुंच सकता है, पहुंचना चाहता है, वो पहुंच जाएगा. Thank you. Yes, Ritisha. Thank you for your question. And right now, you just mentioned that sometimes you just sense that energy and you don't know what it is. Okay, so sometimes it happens with us also. Like Yes. a lot of time, my family keeps asking me, तुझे करना क्या है? तो हाँ. बार fields क्यों shift करती रहती है? What do you want from your life? And my answer is like, I don't know. I just want to be at the Happy? top. Yeah, but And what if you I just want to be happy. That's it. Like, so what if top की whatever definition नहीं देता.
whatever gives you happiness, it is got nothing to do with what you want in life. You Gary का एक कोई सवाल कोई करता था, तो he said, I just want to be happy and have fun. So what if that is not something that people around you can even digest? They think कुछ करना पड़ेगा तो फिर उसके बाद मजा आता है. कोई, and what if you could have it all, Ritisha? तुमने कहाँ तय कर लिया कि एक के बदले में मेरे को दूसरी चीज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? वो ये रियलिटी की कहानी है. एक आइसक्रीम पार्लर पे जाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो संडे खा पाते हैं, वैसे मांगते भी नहीं है. ओ 3 का प्राइस लग जाएगा, छोड़ो एक ही ले लेते हैं. अच्छा, कोई इसके पास तो ज्यादा फ्लेवर नहीं है, चल फिर यहाँ आए, कौन जाएगा उधर, यही ले लेते हैं. दिस इज हाउ वी काइंड ऑफ कीप श्रिंकिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आवर आस्क. पर जिसको चाहिए होता है ना, यही वाला खाना है, कहाँ भी जाएंगे वहां से लेके आएंगे, वो ले भी लेते हैं. और फिर आप उनको देखते हो, कहते हो इनको कैसे मिल जाता है, बिकॉज उन्होंने आस्क करा और उसके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन भी जाना पड़ा, तो वो गए उसके लिए और रिसीव करने को भी तैयार है. और रिसीविंग का क्या मतलब है कि लोग तुमको जज करेंगे, तुमको बुरा भला भी कहेंगे, कोई लोग तुमको बहुत प्रशंसा भी करेंगे. आर यू विलिंग टू रिसीव इट ऑल एंड नॉट make them any significant? Because some people will say, Ritisha, you're so cool, and some will say you're such a stupid person. ये क्या होता है, ऐसे थोड़ा ना मांगते हैं. So are you willing to receive all those judgments and be okay with it and say, I like it this way, I like it? At least कोई कुछ तो कह रहा है, कुछ ना कहने से बेहतर है. Like if I only don't know what that top means for me, like बस And इतना that पता doesn't है कि I matter. want to be popular. तो वो तो कैसे भी हो सकते हैं, पॉपुलैरिटी. Yeah, I know, Gujarati. So yeah, popularity is something that you are functioning from this reality. When you start enjoying what you're doing, automatically things start showing up differently. But when you're kind of chasing that something is running away from you, right? You are doing it with the result that, okay, is this going to make me popular? What if you just start doing something? कोई इंसान है जो बस उसको गाना गाना है, बहुत मजा आता है उसको गाना गाने में, वो गाना गाते गाते पॉपुलर हो जाता है यार. किसी को सिर्फ नाचना है, वो नाच रहा है, अपने लिए नाच रहा है, वो नाचते नाचते पॉपुलर हो जाता है. तुम कह रहे हो कि कुछ ऐसा करना है कि मैं पॉपुलैरिटी तक जाऊं, then you're creating your hurdles there right in the beginning. First of all, your viewpoint is that you cannot be popular. That's why you are even asking for it, right? What if you could just allow yourself, hey, I want to have so much fun doing what I'm doing right now, and that will get me wherever I would like to go. So starting when I used to do my classes, so I used to be little conscious whether people are going to get it or not, and how is it going to be. Too much pressure, like Nishta began the call with that. What if too much pressure, right? I used to be too much pressure, but लोगों को समझ आएगा कि नहीं, उनको मैं जो बता रही हूँ उनको पल्ले पड़ेगा कि नहीं, and then they will think that I'm a bad facilitator. Oh my God, then what am I going to do? Then I'm going to be a failure. Okay, all those conclusions. So it's not that they enjoyed, but I used to be so stressed out. Now, over a period of time, then I started enjoying the way I deliver, and it doesn't matter. And I did a clearing on that. What if I'm the worst facilitator on planet Earth? It made it easy for me. I want to be the worst. Nobody wants to be the worst, do they? But yeah, if I don't have an electrical charge around it, it gets easier for me. That yeah, I would like to be this. That's okay. I don't care what you think about me. This is me, right? And I'm okay to receive your judgments, and I'm okay to take your money. And even if you don't get it, it's not my problem, because I am delivering, I'm giving my best. I know in that moment when I'm there, you may still judge me, and that's okay. Am I willing to receive it? Hell yes. Was I willing to receive it? No. But now when you start enjoying your journey, you will be taken there where you're supposed to go. And if you're waiting for something कि कुछ ऊपर से टपकेगा, मैं तुनतुना बजाना शुरू करूंगी और वो पॉपुलैरिटी मेरे को इंस्टेंटली मिल जाएगी, हो सकता है. बट उसके अंडरलाइन जो आपके जो डाउट्स छिपे हुए हैं ना, ऐसे थोड़ा होता है, वो आपको पॉड एंड पॉक करते चले जाना पड़ेगा. That everywhere you've decided you cannot be or do. You get it? Are you getting it? Nikita, yes. So like this helps me clear out, because what happened was ki I had announced a workshop and I had like little to less registration, so that created like a self doubt. So I did not
ask for it. Like I was like कि अभी last minute पे कौन आएगा and everything. So if that is the thing in that moment, is there anything like clearing statement or anything that you would suggest we can do in the So moment? how cute we are ना, हम last minute तक तो wait ही नहीं करना चाहते हैं, हमें पता है last minute में तो नहीं होगा, last ball पे छक्का नहीं लग सकता. How many people believe that? Is there नहीं anyone लग who सकता thinks? The है. people in Access only register last moment. Huh? Yeah, all I've had people 9:30 in the morning, they saying I'm coming for the class, or 10 बजे class है. So what if you did not have to come to a conclusion? No, कोई नहीं आया तो भी मेरे को करना है. Yeah. Yeah. So if you did not come to a conclusion, last minute पे, and ये तो classes के साथ तो बहुत ही classic है, that you just ask क्या होती है, बार बार मांगते रहो, बार बार मांगते रहो, बार बार मांगते रहो. No, that's not ask. You ask is a gentle request to the universe. You just ask and leave that energy out, and then you ask and then leave that energy out. That's how you ask. And do not come to conclusions, because universe is at work. You're going to be disrupting it if you're going to judge in between. Oh, ये तो हो नहीं रहा. Universe कह रहा है, okay, हो नहीं रहा. Okay, ठीक है, नहीं करना है, इसका मतलब है. Because it's reading you, and you're saying मैं तो बोला भी नहीं था, पर सोचा तो था. It's just picking up those vibrations, right? तो मतलब सिर्फ एक ही बार पूछना है, मतलब मांगना है, रिपीटेडली नहीं मांगना. बार बार नहीं मांगना है, वो फिर डेस्परेट टास्क होती है, और डेस्परेशन में चीजें क्रिएट नहीं होती है. डेस्परेशन में तो आपको चाबी ढूंढ रहे होगे, वो भी नहीं मिलेगी. Yeah. But if you are, can I ask? Yes, yeah, yeah. So you said कि बार बार नहीं सोचना, but then you said that doubts को pod and poke करना है. So वो doubts तो आते रहेंगे, तो you are आने kind दो, of- no you're doubts at conclusion. वो सारे conclusions को turn it into a question. एक क्लासिक जो भी कंक्लूजन आ रहा है, ये नहीं होगा. ओके, ये कैसे होगा और क्या कर सकते हैं, सवाल. ओके, सो आने दो, डाउट्स आना बंद नहीं होगा, क्योंकि चल रहे हैं, और वो डाउट्स आधे से ज्यादा हमारे नहीं है. हु डज इट इवन बिलोंग टू? क्योंकि मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, अंकल ने कह दिया, हो नहीं पाएगा, तो आप भी वैसे ही सोचने लग जाते हो, राइट? कि जो लिटरली जिन्होंने वो पाया है, तुम्हें लगता है कोई 20 रुपया पॉकेट में लेके गया और उसने मतलब बहुत बड़ी अपनी एम्पायर खड़ी कर ली? कोई है? मैंने सिर्फ ये बोला, कोई जानता है उस इंसान को? एम्पायर खड़ी कर ली इंडिया में? हाँ ऐसे हैं. I think Tata, Ratan Tata only. No, I'm मुझे not नहीं, sure. रिलायंस. Reliance. Yeah. Yeah. So he left at 9th. Yeah, I was 10th thinking Reliance. 10th पास भी नहीं है यार वो, तो उसने कर लिया, वो तो कर सकता है. हाँ, ऐसी स्टोरी मत सुनाया करो. But the point is, he is willing to take that whatever it takes. और आसान तो जर्नी उसकी भी नहीं रही होगी. करते करते whatever it takes in that moment, he was ready to do that, right? How ready are we? Ask yourself that question. कुछ भी करने को तैयार हो? So that, yes, Malini. एक second, Malini, before I go ahead, meant you are visible here to ask where does one tune in and ask how to tune into the universe and ask. You are already the universe. Mute yourself, people. You are here already tuned in and wired into the universe. You have to silence your mental chatter. You know how access really works? It silences that. वो mental chatter जो चल रहा है ना, वो शांत हो जाता है. अब जैसे ही वो शांत होता है ना, आपको दूसरी चीजें दिखाई और सुनाई देने लगती हैं. जैसे ही दिखाई और सुनाई देने लगती है, चीजें होने लगती हैं. And you're like, the minute you relax, you start getting the universe in. Otherwise, you're so occupied. Universe कहाँ से आएगा? वो दे रहा है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, तुम सुन भी नहीं रहे हो. Archana is saying, when asking for something, I sometimes feel it is daydreaming, or am I being too greedy, or should I be satisfied, or am I asking too many things at once? And can you not? And if you did not have a judgment on what you're asking for, and are you willing to be greedy and everything, and not kill yourself with your ask? And even if you do you enjoy daydreaming? Why would you make yourself wrong for it? Malini, you had a question.
I had an experience to share. Yes, please. There are two processes in foundation which are introduced this time only, which are PRs and not how to clear them. Wow, it's Right? just phenomenal. Yeah. So, my classes weren't showing up. I cleared my PRs and NORs after Global Foundation and during that also. Yeah. And after that, I announced the class and nobody showed up. But still, the class happened. I ran the process on myself, and the class happened as it has to happen. Oh, I need to share that. My Mumbai class was not about to show up, and I was almost about to cancel it till I said no. This time I'm not canceling in my head, and I ran those processes. Yes, you're right. And I one more thing that let me just finish finish yes that yes. after that, 4 people called me and showed up for the same class That's exactly. I mean, I got the because energy I of was that. Yeah. congruent with that ask. And you were willing to stand there even if nobody comes, and you're just going to be there, and it shows up. Yes. So that I is what mean, happens when you run these fabulous processes, because end of the day, whatever you are judging yourself or others for, you are creating presumptive realities. You are creating the need for reactive realities. And once you totally. clear it all, then there are no doubts which are left inside you. So that's the ask. So ask is that okay? Suppose you want to attend, you would like to attend a class which is for 1,10,000 now. You would like to, and you've already rejected in your head. Rather than saying ye ho nahi sakta, you can simply be in a question: what will it take? What energy, space, consciousness, choice can me and my body be to create that with total ease? What if you did not have to struggle? Our point of view is that you have to struggle. What if you gave that up now? How would that be like? And What from would where that are be you like? getting this point of view that you have to struggle all the time? Yeah. Where have you decided already that you have to? And what if that's not true? So it's about listening to the silent whispers. They're like whispers, really whispers, okay, of the universe. And universe is out there to gift you. And you've already decided that you're not allowed to ask for what you would like to have. And there's so many people who would like to gift to you, right? But you decided by avoiding and defending kisse lena hai, kisse nahi lena hai. So you are anyway cutting off your receiving, right? If you had absolutely no point of view about who's giving you what, would you not receive it? There are some people who तो कहेंगे ये आपको सपोज कुछ अच्छा खाना है and ये किसने बनाया है? नहीं, हम तो बाहर का ही नहीं खाते हैं. वो इंसान ने कैसे विचारों से बनाया होगा तो वो खाने में आया होगा, तो हमें वैसे नहीं चाहिए, तो वो लो ये लो कट कर दिया आपने वहां से भी. I'm just giving a random example, but I'm just simply saying, how much can you cut off your receiving? And how many of you are functioning from that give and take program that you've implemented, which is the human reality? Humanoids love receiving, it's like about gifting and receiving. So at what age did you buy into the give and take program and give up your gifting and receiving everything that is times a gazillion? Will you destroy and uncreate it now? Right, wrong, good, bad, purple, line, short, boys, provides, and beyonds. Somebody had their hand up? Somebody had a question to ask or say? Am I missing out? Okay, cool. Firdaus had a hand up, okay. Or maybe. So anyway, and if you're truly willing to receive all energies and have no point of view about it, you can have more choice. Because then you don't have to judge यहाँ से नहीं, वहां से नहीं, इससे नहीं, ऐसे नहीं, कितना, कहाँ से, right? You will be able to manipulate and choose, change, and guide everything to a degree that you've never had before. You just can receive. अब रिसीविंग का ये मतलब नहीं है कि आप उन लोग के साथ जाके हैंग आउट करो जहां आपको मजा नहीं आ रहा है. I'm not saying that you have to go and hang out with people. I'm simply saying, are you willing to open up your receiving and just receive and have no point of view about it? So everywhere you've been keeping your money flows, your business to a minimum, so you can control it, so you don't have to receive from anyone or anything else. Everything that is times a gazillion will you destroy and uncreate it all. Right, wrong, good, bad, purple, line, short, boys, provides, and beyonds.
And the whole thing is we're not taught how to receive in this reality, right? तो जब सीखा नहीं है रिसीव करना, तो मांगेंगे और फिर लेना पड़ेगा, तो फिर वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना. So yes, somebody has a question. Yes, Juhi. हाय. सो कभी कभी ये होता है कि आज तो कर दी, पर एक वो 0.1% का सेल्फ डाउट आ जाता है. बस वही बात, So- 0.1% से ही आप चूक जाते हो, बाकी सब ठीक है. हाँ, बस वही. यस यस, तो उसके वो- ऊपर कुछ बताओ. तो वो सी पॉइंट इज, डाउट अगर आता है तो वो किसका है पहली बात तो, क्योंकि आपके आसपास आपको बहुत यकीन सारे वाले लोग लोग हैं. मिले. नहीं, बहुत यकीन करते हैं नहीं आपके ऊपर आसपास वाले लोग. बट एनीवे, सो यस, सो वो लोग नहीं करते तो हम कैसे करें अपने ऊपर, जब इतने महानुभाव लोग कहते हैं, हम जिनको माता पिता जो हैं वही हम पे विश्वास नहीं करते, तो हम हमारी क्या औकात है उसके सामने. एंड एवरीथिंग दैट इज कैन डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट यस. दैट परफेक्ट लाइन शॉट बॉयज फॉर एवरीवन. तो जहां ओके, कौन सा पेरेंट आपका है जो अपने आप को सेल्फ डाउट करके छोटा करके बना के चलता है, और किसके साथ आपने अलाइन अग्री किया है या रेजिस्ट और रिएक्ट किया है? ना चाहते हो भी आप वही बन जाएंगे, क्योंकि आप रेजिस्ट और रिएक्ट करते हैं. यस यस. सो अगर मेरे फादर जो है, हम लोग दिल्ली से है राइट, तो मेरे फादर सिर्फ गाली बोलना बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो वो सी बात करते थे, तो वही पहले बड़े हुए सीखा, तो वो चीज बुरी होती है ना, बैड होती है, यू नॉट सपोज टू अब्यूज. तो वो रेजिस्ट और रिएक्ट किया. देयर केम अ पॉइंट एट 30 years of age, I was only talking the language that he was talking, and I was like, wait a minute, I did not like doing this and I'm doing this. How much judgment would I have gone through then? And now अगर फ्लो में निकलती है तो निकलती है, नहीं निकलती है तो I don't judge myself, और निकल भी जाती है then also I don't judge myself. You, how much ease can you have? बेल्ट लगाती हूँ ना, बेल्ट गाड़ी की. Yes, yes, बेल्ट गाड़ी की लगाएंगे. So yeah, please mute yourself, everyone. So yeah, how, you know, instead of asking or going into a conclusion or into the definition of, you know, what you would like to show up, you know, what you would like in the world or in your creation to show up, कई future में है, for example, you know, can you ask that to bring it into the now and ask, what do I need to be or do today to have that future right away, like here, now? What if you're not looking पीछे, that वो अच्छा वक्त था, अब नहीं है? What if you're not looking at a future and then saying वो आ सकता है, पता है, मिल जाएगा, पर अभी नहीं है? What if you could just simply ask, what do I need to be or do today to have that future right away? And how many of you are doing business, your relationships, your health, your body, your businesses according to this reality, which is only projections, expectations, separation, judgments, and rejections? What if your creations itself, you know, create करने में मजा आ रहा है, oh my god, I'm just loving this creation, and see the magic or the energy expand and grow, and you're like, wow, I would like to have more of that. So what Jays are you using to create dominance of equal to MC square is always seeking and choosing money, relationships, businesses as this reality that keeps you from actualizing a humanoid version of it, or humanoid version of possibilities on this planet. Everything that is really destroyed and uncreated now. Right, wrong, good, bad, perfect, line, short, boys, provides, and beyond. So what if you could ask the universe, show me something, some magic today. Universe, let's do this. Universe, you know, like if you could just simply ask, आज कुछ धमाल किया जाए, आज कुछ पागलपन किया जाए, whatever, you know, like what would that be like? What did you to give up what you picked from your parents that you resisted? I resisted my dad because my mom was resisting my dad. So, and then I started resisting my mom. And then I was like, so yes, a beautiful process is biomimetic mimicry. Sadly, that is no longer there in the foundation, but it is there in the body class. So a lot of BMM, and the only fact that एक बारी acknowledge कर लो, oh, ये तो मैंने पापा से ले लिया, or this is me like my dad. And then लोग तुमको जज करेंगे कि तुम तो तुम्हारे पापा जैसे हो, and पापा तुम्हारे घर में विलन हो. I just an example, मेरे थे.
So anyway, and you don't want to be that villain, right? So what if you could be an allowance of it? भाई at the end of the day sperm दिया है उन्होंने तुमको, तो क्यों resist कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो उस बात से, right? So how do you stop becoming that parent you have been resisting all along? Pod and pop. Everywhere I aligned and agreed with or resisted or reacted to one of my parents or both of my parents, I now destroy and uncreate it and keep doing it till the time you become the interesting point of view. Because the fact is, you are not your parent. You're just a shoddy mimicry that you're doing of them. And now there's a choice. You can simply ask universe, show me more magic. How can I be more of me? You can be you anytime, but have you even asked for it, So everywhere you've decided that you need to turn off your being so that you can fit in with everyone. Will you just try and uncreate it now? Right, wrong, good, bad, part, line, short, boys, provide them. You could simply ask, what do I have to be or do to receive more from the universe? Or just ask more magic to show up in the universe, that more magic to be me. The only thing is 10 seconds increment. If you could just start living with that, which is again a part of foundation, of course. But yeah, if you could just simply ask that, okay, what is it that I'm really good at? And what if it's you? What if you did not have to look at your parents for that? If I were truly being me, who would I be? What would I be? Where would I be? When would I be? How would I be? So you ask the universe to be your playmate. That is the ask. Hey, universe, let's play. Okay, I'm waiting. Okay, and start creating with that. It's so much fun you can have that तुम्हें literally एक टाइम आएगा कि शायद लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको इतना मजा खुद में आने लगेगा और तुमको इतना प्रफुल्लित आनंदित नहीं सॉरी इतना जॉयफुल देख के people लाइक यही तो करना था, ये कहाँ है, यही यही चाहिए मुझे, राइट? भाई दुख तो बहुत सारे लोग बांटते, तुम बताओ, अच्छा मुझे बताओ, तुम यहाँ कितने लोग हैं जो दुखी वाली मूवी बार बार देखते हैं कि थोड़े और आंसू आ जाए? वो भी एक दिन तो रुक जाएंगे, ये मेरा यकीन है, राइट? मैं एक बार से ज्यादा दुखी मूवी नहीं देख सकती हूँ. I that's my thing. I cannot watch it, right? For happy movies, yeah, you can just probably watch it on repeat, like Three Idiots, some classic movies that make you laugh, and you can probably laugh at the same thing. वो वापस से केले के छिलके पे गिरता है, and you can laugh again. You know that वो होने वाला है, फिर भी आप हंस सकते हो, right? तो तुमने कहाँ तय कर लिया है कि मुझे मेरे दुख को सेलिब्रेट करते ही चले जाना है, बिकॉज बहुत ज्यादा खुशी तुमसे सहन नहीं हो पाएगी और तुम बदल गए और परिवार तुम्हारा दुखी ही रह गया कि तो तुम्हें दुख तो मनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो दुखी रह गया और तुम अपनी खुशी नहीं मना सकते हो. Can you please destroy and uncreate that? Right, wrong, good, bad, perfect, line, short, boys, provide them. That's a choice. What if you're not a failure? That's all I'm asking. ज्यादा ज्यादा एक और बार ही मांगना पड़ जाएगा. And what if मांगने से तुम भिखारी भी नहीं हो जाते हो? What if universe is there? It's just there. दरवाजा खोलो, रिसीव करो, सिंपल सी कहानी है. बट तुम्हें लगेगा नहीं, यूनिवर्स से लिया है तो मुझे देना भी पड़ेगा, तो दे दो. क्या दे सकते हो, क्या देना चाहते हो वो पूछो. थक क्यों रहे हो? आई लाइक अक्षय कुमार इन दैट हाउसफुल मूवी. थक क्यों रहे हो यार? फिरदौस, आपने हाथ उठाया पूछने के लिए या मेरे को हाई फाइव दे रहे हो आप? नो मैम, एक्चुअली मुझे कब से पूछना है, बट आप बोल रहे थे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी. ये भी इसलिए ये डिस्टर्ब आपने कैसे तय कर लिया आपने मेरे को डिस्टर्ब करना है? आपने अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि मैं हूं जो मैं डिस्टर्ब कर दूंगी उनको. तो वो पॉड एंड पॉक करें. ये चीज आपको कॉल Right. करने की इच्छा होती है तो उठा के कॉल कर लेना होता है. सामने वाला बता देगा कैन यू कॉल लिटिल लेटर, एंड दैट्स ओके. उसमें ना Right. आपकी रिजेक्शन है ना सामने वाले की. हाँ जी, बोलिए. एक्चुअली मैम, जो आपने बोला ना कि आस्क एंड रिसीव, राइट? या तो आस्क जस्ट वन टाइम ही करना है, मीन्स सिंपली चीज है कि जो हमें नहीं मिलता है, सिंपल है कि हम वही चीज मांगेंगे यूनिवर्स से, और वही थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे कि हम हर बार वही चीज मांगे. यस राइट? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि इम्पोर्टेंस, सपोज
अगर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मुझे कोई इम्पोर्टेंस जितनी चाहिए दे रहा है, बट जितनी चाहिए मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जितना मैं वर्क कर रही हूँ Yeah, एज ए होम या जो भी वॉट एवर। सो बेसिकली क्या देखना होता है, अपने अंदर ही झांक के देखना है कि क्या जो चीज हमारे अंदर है नहीं, वो हमको बाहर से तो कोई नहीं दे सकता है। तो सिमिलर केस विद मनी ऑल्सो, अगर आपको लगता है मनी का सोर्स बाहर है कहीं पे, तो वो बाहर से कहीं से नहीं आ सकता, वो अंदर ही है, कहीं छुपा के रखा है, उसको बाहर निकालना है। नाउ इम्पोर्टेंस अगर आप अपने को नहीं दे रहे हो, तो वो दूसरा चाहे कितनी भी देगा, वो पूरी नहीं पड़ेगी। सो वो सबसे पहले जब हम एक इक्वेशन बनाते हैं, आप तो मैथ्स टीचर हो वैसे भी, तो मैं लाइफ की इक्वेशन में जब हम अपने को उसमें से माइनस करके रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट जो है वो माइनस में ही जा रहा होता है। तो वो इक्वेशन में अगर आप अपने को ऐड ऑन कर लें एंड अपने को भी रखें, लाइक अगर सपोज खाना खाने की बात है, तो सब लोग खाना खाना बना रहे हैं या जो भी है, तो आप सबकी पसंद का बनाते हैं, पर अपना सोचते हैं छोड़ मैं यही इनमें से कुछ खा लूँगी। या हम होटल जाते हैं, वहाँ पे जो सब मँगवा रहे हैं हम एग्जैक्टली। सब कैसे। तो अब अपने को चाहत क्या है, अपने को क्या पसंद है, उसमें अगर हम अपना भी जोड़ लें, तो क्या होगा कि हम दूसरे की इंतज़ार नहीं कर रहे, कोई मेरे को वैल्यू करेगा या मुझे इम्पोर्टेंस देगा। इट विल गेट ईज़ियर फॉर यू। राइट। तो सिंपल वो क्योंकि कोई आपको कंटिन्यूअसली ग्रैटिट्यूड भी देगा ना, वो भी रिसीव नहीं होगा। पहले खुद का ग्रैटिट्यूड खुद के लिए नहीं है, तो दूसरे से कौन रिसीव कर सकता है? राइट। दैट एग्जैक्टली। एक छोटी सी चीज मैंने की, मुझे चाहिए थे सैंडल्स, और मुझे वो गिफ्ट चाहिए थे, कोई तो दे मुझे, और मांगने का भी ईगो आ रहा था। So what I did, I went in the market, I purchased, and I said, okay, this is a gift I am buying for myself. दैट्स अमेजिंग। और So उसके बाद everywhere, no, with that point, Have to try. everywhere you would bring in the ego with your asking also to the universe, because you are in a what do you say, a conflict with the universe. Okay, that you're just fighting with the universe. Will you please just turn and create all your conflicts with the universe that you have, that and start asking and ask for the fun of it. Everything that is, will you destroy and uncreate, right, wrong, good, bad, purple, line, shorts, boys, provide and beyond. So हम मजे के लिए कभी नहीं मांगते हैं, लाइक छोटे बच्चे मांग के तो देखो। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैंने ऐसे ही एक टाइम पे आई वाज अ सिंगल मदर, मांग लिया। मैं कहा यार आई मिस दोस कॉर्पोरेट ट्रिप्स, क्योंकि वो लोग हमको लेके जाते थे बाहर घूमने के लिए, ठीक है, उन फुल्ली पेड ट्रिप्स। ओके, दैट वाज माय थिंग। एंड 2015 की बात है, मांग के छोड़ दिया। मैं कहा यार कॉर्पोरेट्स में जाने का जलसा है, लोग जाते हैं बाहर। तो यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन चित्रलेखा मिसेस गुजरात एंड आई वन इट। I wasn't ready for receiving it because Wow. I wasn't ready because I said अब ये मिल गया, इसका क्या करना है, मेमोरीज बन जाएंगी। यूरोप का ट्रिप मिल गया, फुल्ली पेड फॉर 2 पीपल, क्या करेंगे हम। सो मेरे पास ऊपर का खर्चा करने के लिए नहीं था वो टाइम पे। सो देन आई सेड ये तो सेकंड वाला प्राइस बड़ा अच्छा था, गोल्ड के कंगन, वो एटलीस्ट रहेंगे तो सही। ये तो ट्रिप करके आ गया पूरी। नाउ I'm telling you that I lacked gratitude for everything that was showing up in my life. And then things started changing. And then I was like, wow, okay, thank you, universe, because ek saal aur gaya and I could manage to go out. I created memories. I created my husband. I created so much, I created a lot of things. wow. पर वो मोमेंट पे जब चीज आई मेरे हाथ में, मैंने कहा यार मांगा तो मैंने ही था, बट इमीडिएटली मेरे को खुशी एग्जैक्टली नहीं हुई। मैं कहा नहीं, टीवी मिल गया एक थर्ड जो आई थी किसी को, या सेकंड वाले को गोल्ड का कंगन, दैट वाज लाइक उसकी वो शादी होने वाली थी, तो शी गॉट व्हाट शी गॉट। आई कुड नॉट चेरिश दैट, बट सो दैट वाज, तो अगर यूनिवर्स दे भी देगा ना, तो तुम उसमें भी खामियां निकाल लोगे। सो एवरीथिंग दैट इज विल यू डिस्ट्रॉय एंड uncreate. Yes. Right, wrong, good, bad, perfect, line, You- short, boys, provide none. Mona is saying, I'm getting tired and fatigued very frequently. Please run timers exercise that is there in your bars manual and get your bars run. Could my ask to the universe be to get rid of what is draining my energy? Yes, you could. And everywhere I'm allowing myself to drain my energy, or I'm letting people suck out my energy, or everywhere I am not being the power of me and be the energetic self throughout the day. Yes, you can. Whoever is sucking your energy out and wherever you are giving away your powers, you can pot and poke that. क्योंकि आपने कहा था
Oh, it resonated. Okay, yeah. Yeah, so I mean, could you have gratitude for what you've created, what you've received already, and still keep asking? हमें लगता नहीं भगवान को पता होगा अंदर से, मैं नहीं पूछ रही हूँ शर्म आती है भगवान क्या सोचेंगे, अभी मांगते ही रहती है भगवान मस्ट बी टू बिजी ऑलरेडी, वो मैं बार बार मांगूंगी वो फिर थक जाएंगे, फिर नहीं देंगे. All your assumptions, all your presumptive realities with even asking, that creates the need of reactive realities will you destroy and uncreate. Right, wrong, good, bad, part for client shots, boys, provides, endurance. For a long time, I had an ego hassle with asking to the universe. So I felt like I was more of a man. भगवान को पता नहीं है मेरे मन में क्या है, भगवान को पता चल जाएगा. No, he's not waiting. You have to still ask. Even angels come to your rescue when you ask for it. Okay, when you're not asking, people think सब ठीक ही होगा. So whatever asking does not have to have any wrongness attached. And those people who keep asking, keep receiving also way more. And then you will judge yourself, they have more and you don't. What if you just simply ask and have fun with it? Right, wrong, good, bad, proper client shows, boys, for me. Thank you so much for attending this call. So a new foundation, like Malini said, is phenomenal. Coming on 29th of April in Delhi and 4th of May in Mumbai. So have fun. If you haven't yet attended, consider investing in yourself for one. And what all can change. What all wiring that you've taken from your parents, would you like to please change it and change it for good so that you can allow yourself to be you. Any? Thank you. ये बहुत सन्नाटा हो गया वैसे भी. It's okay. We're overshooting the time. Yes, Thank you. Mansi. Mansi is going मुझे to be there. एक्चुअली करना है फाउंडेशन में, वेट नहीं कर पा रही हूँ. Yours is half price पे होगा तुम्हारा वैसे भी. हाँ. What मैं will बहुत it take? एक्साइटेड हूँ. Just simply ask what will it take. Don't go into any judgment or conclusion. Just simply be in a question. Thank you so much. What it will take for me to go Just for this simple. foundation. Yeah, just be the see ask. नहीं हुआ तो ये नहीं है कि अभी नहीं हुआ, आगे हो जाएगा. But you just be in the ask, or at least ask a question. और मांग के छोड़ दो, हो गया great, नहीं हो गया you don't have to judge yourself. मेरी अच्छे से नहीं मांगा था. No, you don't have to do that. वो फाउंडेशन एक नशा सा है, वो लत लग गई. ऐसा कुछ तो हुआ है. So I'll tell you, go make a video like lat lag gayi. Obviously, like Jacqueline, if you're dancing, guess what? So many people will want to watch it. मैं भी कविता यही बोलना चाहूंगी कि फाउंडेशन एक लत जैसा है, एक नशा है. It is. वो डिफरेंट लेवल का, ये सभी क्लास में फाउंडेशन टोटली डिफरेंट ही है. Oh yes, any class you attend is going to be different, right? हाँ. For Delhi, you can contact Nishtha for or Ranjan, whatever. Ranjan is also there. Ranjan is in Mumbai. Please contact, and what fun can be created. You will be amazed. Yes, foundation nasha hai. Jeda nasha. Oh God, there's so many songs. मेरे को songs बड़े याद आ जाते हैं. So yeah, so would you allow yourself to be doped with consciousness? Wow. Or dope of consciousness. Awesome. And that is ever expansive. Uska hangover nahi hai. Uska, you can just wake up morning and then you can be so happy and crazy happy and then weird and then again crazy happy and then keep expanding that, and jisko tum chuo wo tumhara jaisa ho jaye. It's like electricity passing from one person to the other to the other to the other. What if it could be that? What if you could be that? Just kind of get the energy of that. What would that be like? You are going to infuse enthusiasm into people. Yeah, that energy, that expansive energy. एक चीज और होता है, अभी अवेयरनेस बढ़ गया है. लोग पूछते हैं तुम्हें कुछ ज्यादा पता है क्या? हाँ, आई नो. तो कुछ बताओ यार, कुछ कर सकूं. तो बताते हैं, ओके, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन चूज टू डू, लेट मी नो. पैसा लगेगा, अवेलेबिलिटी लगेगा, गायब. So what are you aware of? People are not willing to pay for it, right? And they are not probably the ones. They will come when they have money in their hand. They will come to you, but they'll come at a later date. But you being you will keep inviting people.
दैट कुछ तो पता है ना तुमको जो हमें नहीं पता है, इसलिए वो लापता से पता होने तक का जर्नी है उनका, जब पता चल जाएगा व्हेन दे कम टू यू। मैं ये कॉल पे एक बात शेयर करने के लिए डेफिनेटली चाहूंगी कविता के आस्क एंड यू शैल रिसीव वाला जो अपना टॉपिक है आज का, उसी के ऊपर मैं बोलूंगी कि मैंने जब फाउंडेशन किया वो भी मुझे कविता ने सिखाया कि आस्क करो और हो जाएगा, और वो हो गया। मैं 6 महीने से आस्क कर रही थी कि मुझे यूएस जाना है, यूएस जाना है, यूएस जाना है, और मैं गई कनाडा मेरी डॉटर को मिलने के लिए, पर वहां पर मुझे रहने का और मेरे फ्रेंड के यहाँ पे रहना पड़ता था, और वो जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा टिकट करा कि चल तू यूएस चली जा, अपने फ्रेंड्स वहां है तो वहां पे तुझे अच्छा लगेगा, तो तू 2 महीना एंजॉय करके आ। और अभी मैं यहाँ पे और 2 महीने से यहाँ पे हूँ यूएस में, यानी 3 महीने से मैं यहाँ पे हूँ इंडिया से। तो यही है कि अगर आप मांगते हो तो आज नहीं और कल वो आप रिसीव करोगे करोगे और करोगे ही, वो भी पति से। माय गॉड टीनू, ओह माय गॉड, तुमने तो झंडे गाड़ दिए भाई, पति ने दिया है तुमको टिकट, क्या बात है, शाबाश। 6 लाख का 2 कंट्री का मेरा टिकट था पहले, उससे उधर का वहां से कनाडा से रिटर्न था, वो उन्होंने, मैं रोने लगी कि मुझे नहीं अच्छा लगता, उन्होंने वहां से यूएस का करवाया, उसका भी पैसा। अभी 2 जगह से मेरा ओपन टिकट है, कनाडा से अहमदाबाद का रिटर्न है और यूएस से भी अहमदाबाद का रिटर्न। चलो वापस तो यहीं आओगे, खैर कोई बात नहीं है, बट एंजॉय करो। नहीं, अभी मैंने उनको बुला लिया, और यहाँ पे मैं उनको बोली कि अभी यहाँ पे हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे कुछ करेंगे। तो सोचिए क्या, अगर आप मांगते हो तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के देता ही है। और इसी के लिए मैं ये एग्जांपल देने के लिए मैंने ये शायद कॉल अटेंड किया। हाँ नहीं बिल्कुल, बिकॉज मैंने 2017 में सेंटर की आस्क रखी थी अपने, और वो नेक्स्ट वीक ओपन होने वाला है यहाँ अहमदाबाद में। So वो भी हुआ। I'll be traveling to US, Canada in this vacation. But I want to see my place of birth. I was born there, and I never thought that I would ever visit US, Canada. So yeah, ask and you shall receive. That is the law of the universe. So if you could just be legal enough to ask. एज नहीं होती है, कविता लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मांग लेते हैं, पर कुछ ऐसा मतलब कॉन्शियस होके या पता नहीं इतना ध्यान नहीं देते, बस ऐसे विश कर लेते हैं और वो विश पूरी हो जाती है। जैसे मैंने कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ बुक्स खरीदे और मैं सोच रही थी कि इन्वेस्ट तो कर दिया, पर और भी कुछ मुझे बुक्स कहीं से गिफ्ट कुछ मिल जाए। तो 2 दिन में मुझे एक कॉल आया एक बंदी का, और वो बोल रही है कि वो शिफ्ट कर रही है और ये सब बुक्स है, कार्ड्स है, क्रिस्टल्स है, वो उसको नहीं चाहिए। इसमें से क्या मुझे चाहिए मैं बोल दूं। मैंने जो भी देखा मुझे सब बढ़िया लगा, मैंने सब उसको बोले देने के लिए, और मेरे फ्रेंड ने जाके कलेक्ट कर लिया मेरे पास। जब वो पुणे में आएगा तो वो दे देगा, बट 2 ही दिन में, और पता नहीं कैसे हो गया मुझे सब। ये अपने आपने म्यूट कर लिया, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। यही तो श्री, यही होता है। मांगने का मतलब ये नहीं है कि पॉट के ऊपर बैठो और आती नहीं, मिलता नहीं, ऐसा नहीं करना है। मांगना मतलब मांग के छोड़ दिया ना, वो तीनों ने भी यही किया, कितना अच्छा हो ना इससे जाए तो। बट ये थोड़ा ना कि रोज सुबह उठ के मंत्र जाप कर रही है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। उसके लिए वो फिर जो भी चीजों करने की जरूरत है आपको, अगर बाहर सपोज आपको फॉरेन कंट्री जाना है, बस फॉरेन कंट्री जाना है, ओके फॉरेन कंट्री जाना है, क्या करना होगा, क्या अगर कुछ करना ही है तो किससे बात कर सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, हाउ कैन आई जनरेट फंड्स, हाउ कैन आई हैव ईज विद ट्रैवल, ओके ये कराना पड़ेगा। मैं यूएसए का वो क्या है, वीजा लगाना पड़ेगा, व्हाटएवर दैट इज। तो और हाँ, तो थिंग्स आर पॉसिबल। तो तुम सोचो तो सही कि कैसे बोला यूनिवर्स को, और यूनिवर्स ने, दैट इज हाउ इंस्टेंटेनियस इट कैन बी। अगर आपके खुद के अंदर डाउट्स नहीं होंगे, हम हाउ में पड़ जाते हैं। आई यार बी बॉदर्ड अबाउट द वाओ, नॉट अबाउट द हाउ। So yeah, thank you. So just have fun with your ask. Thank you. जस्ट अभी मैंने मेरे घर कितने साल से ना मैं रोज पूछ रही थी घर बेचना है क्योंकि मुझे बड़ा चाहिए। हाँ, और जो भी कोई कस्टमर आता है मैं रिजेक्ट करे जा रही हूँ क्योंकि सही से प्राइस नहीं मिल रहा है। तो आज अभी मैंने जस्ट पूछा, कॉल चल रहा था,
भाई तेरे को बिकना है क्या? बोला हाँ। तो अभी तक जितने आए किसी ने राइट ऑफर किया क्या? नहीं। ठीक है, तो बुला लेगा? हाँ। एंड नाउ आई एम लीविंग दैट टू इट. It has to bring its own owner, and this is the Exactly. wow. Thank you. It is because the same thing happened with the center, right? I created it in a way that जो खाली जगह है ना वो मुझे बुला ले अपने पास, and I literally was drawn towards it. वो बिल्डिंग हम कभी जाने ही नहीं वाले थे उस बिल्डिंग के अंदर. Wow. With बिना brokerage के, बिना किसी चीज के, I mean, it just have got creative, was so magical. Yeah. I'll I'll come to post see your pictures. center in Ahmedabad. Yes, please, most welcome. आप So, yeah, अहमदाबाद what में if रहती हो? मैं अहमदाबाद में हूँ? Yes. Okay. I will also join, Kavita, at your Thank center. you, please. Yes, yes. I'm looking at people who can share, contribute, and yeah. Yes, Parul, Bao and how this came in last foundation Rajkot में अभी जब खत्म करी थी. That it's like we're bothered about the how. What if we could just enjoy the Bao? Yeah. Cool. Thank you for attending, and thank you, Nishta, for this call and creation. And see you guys somewhere. Bye. 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 Thank you, Thank you. Kavita. Thank Thank you so Thank much. you. Thank you, Kavita. Thank Thank you so